समर्पण का मतलब है कि आप जो कुछ हैं अपनी तरफ से पूरी समर्पित कर दीजिए, अपने आप को उसमें लीन कर दीजिए। जब समर्पण हो जाएंगे तब सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जब लोटा बिल्कुल खाली हो जाएगा तो पूरा भर जाएगा। अगर तुम्हारे चित्त पर पूरा चित्त भरा हुआ है, दिल भरा हुआ है, पूरा ललाट भरी हुई है, तो उसमें नए अक्षर नहीं लिख सकता कोई भी, मेरा उपदेश बेकार जाएगा। तुम्हारा बिल्कुल कोरा कागज लेके आओगे तो उसमें जो भी पंक्तियां लिखूंगा तुम पढ़ सकोगे। पहले से भरा हुआ उसमें झूठ, छल और कपट और व्यभिचार, बदमाशी, छल और सब कुछ लिखा हुआ है, सब भरा हुआ है कागज। अब उसमें क्या लिखूंगा मैं, कहां से लिखूंगा? समर्पण का मतलब है कि जो कुछ मैं आज खाली हूं, बिल्कुल आपके चरणों में हूं, अब आप जो कुछ मुझे बनाना चाहें बनाइए। तो अभी तक की जिंदगी मैंने जी ली, अब आप मुझे जी के दिखाइए कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। जो आप कहेंगे वैसा करूंगा। फिर उसमें तुम्हारा पद काम नहीं आएगा कि तुम बहुत महान हो, ये कोई वैल्यू नहीं रखती। फिर तुम करोड़पति हो, ये भी कोई वैल्यू नहीं रखता। समर्पण का मतलब है तुम कुछ हो ही नहीं। फिर तुम समर्पण भी करो और फिर एक कुर्ते का करोड़ का झटकोर, मैं मतलब एक ऑफिसर हूं, तो तुम्हारा समर्पण नहीं है फिर वो। या तुम बहुत विद्वान हो, वो समर्पण नहीं है। समर्पण का मतलब है तुम कुछ नहीं हो, मैं बिल्कुल खाली हूं। अब मेरे पास न पद है, न प्रभुता है, न पैसा है, न धन है, न दौलत है, वो जो कुछ मेरे घर में पड़ा है। यहां पर जो मैं हूं वह बिल्कुल पूर्ण भाव से आपको समर्पित हूं। ये समर्पण है। जब ये स्थितियां आती हैं तब उस चैतन्यता से शिष्यता में आता है, तब वो शिष्य बनता है। तुरंत शिष्य नहीं बनता। पहले जिज्ञासु बनता है, फिर चैतन्य बनता है। चैतन्य के तीनों बिंदु उसके जीवन में आते हैं, तीनों बिंदु आते हैं तो शिष्य बनता है। और जो शिष्य बन जाता है, शिष्य का तात्पर्य है, संस्कृत में इसका अर्थ है नजदीक जाना। शिष्य और गुरु के नजदीक जाता है। नजदीक जाने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल उसके सीने सीना भिड़ा के खड़े हो जाओ, ये शिष्य का मतलब नहीं। गुरुजी आपने कहा था, मैं हैदराबाद में गया अभी 4-5 साल पहले की बात। मैं गुरु पूर्णिमा का अवसर था और मैं गंगोत्री से आ रहा था, उसमें से कई लोग यहाँ होंगे साथ में। वहां एक शिष्य था, उसने बड़ा आयोजन अच्छा किया। उन सब कम से कम 200 शिष्य मेरे साथ में थे। उनको ठहराने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छी की। जब हम हैदराबाद में घुसे तो उसने बैंड बाजे लाया, बेचारे को खूब खुशी मनाई। जिस धर्मशाला में, जिस जगह पर हमें ठहराने की व्यवस्था थी, वो गेट पर वो खड़ा हुआ आरती लगा करके, और उसमें बड़ी बड़ी बत्तियां लगाई थी, मोटी मोटी बत्तियां, रुई की, घी की भरकर की बत्तियां लगाई। और बत्तियां लगाने के बाद जब मैं घुसने लगा, आरती करने लगा, सब गुरु आरती होती है, गुरु की आरती करके उसको अंदर ले, तो मैं भी खड़ा हुआ, भाई के साथ में थी, पीछे से भी थे। अब वो ठेठ आरती लाते लाते ठेठ यहाँ तक ले आए। अब मैं मुंह नीचे करो, ठेठ और लाया, मैं और मैं अब पीछे तो गर्दन अब कितनी गायब हुई थे। अब मैं संकोच के मारे, और उनके भी बेचारे भाई बहन सब मंदिर से दाया, मैं कभी कुछ कहूंगा तो इसको बुरा लगेगा। मैं कहा नहीं कहूंगा, अब मेरे बाल जलेंगे, अब मैं महान बन जाऊंगा। तो मैं और ये पीछे करता हूँ और पीछे, जय गुरुदेव दया निधि। अब मैं दया निधि नहीं, अब तो अस्पताल निधि हो जाएगा। तो मैं हाथ से उसके आरती को उसको, ये क्या? और मैंने कहा भाई आरती क्यों नहीं कुछ ऐसा, आप कब गवाते हैं? मैंने कहा एक बार आया तो फंस गया, इसका मतलब ये तो मुझे सीधा यहाँ अस्पताल घर ही पहुंचा दो। मैंने तुम दूर से आरती करो। नहीं गुरुजी, बार बार थोड़ी होता है ऐसा, मतलब बार बार थोड़ी आता है, आज ही आया और वो आरती नजदीक आया, उसकी लपट मेरे लगे। वो दया निधि ने हितकारी वो बहुत मुश्किल से पूरी हुई। तब तक मेरा शरीर, वो चेहरा लाल सुर्ख ऐसा हो गया। मैंने भाई बेचारी घबराई, सोचा कुछ हो गया गड़बड़। वो मेरे तो ताके मेरे हाथ से टल्ला मारे, तुम टल्ला मारे, मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं तो फंसा हुआ हूँ यहाँ शिष्यों के बीच में। अब वो दिन हितकारी तो हो गया, तो ये हितकारी हो, कोई भला करे, मेरा तो मर्जी इनकी बाकी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जैसे मेरे नजदीक आके, ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल कल आके सीने से भिड़ करके खड़े हो जाओ तो लो गुरुजी आपने कहा नजदीक जाना, आ गया मैं आपको। मेरी हड्डियां तोड़ने की जरूरत नहीं है, प्राणों से प्राण जुड़ने की क्रिया है। आप हृदय से जुड़े, नजदीक आने का शिष्य का मतलब है। फिर जब 30 स्टेज में शिष्य होता है वो फिर नजदीक आता है। नजदीक आने का मतलब ये होता है कि फिर उसका चिंतन खुद का कुछ नहीं होता, फिर उसमें कुछ प्रश्न भी नहीं होते, तो ये भी चिंतन नहीं होता कि आडमास का आदमी है, एक देवता है कि क्या है। उसके जीवन में ये सब कुछ है, गुरु है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, यही सब कुछ है। तब वो जब चरण छूता है तब उसको चमड़ी नहीं दिखाई देती, उनको हरिद्वार दिखाई देता है, उनको मथुरा दिखाई देता है, फिर उनको वो चरणों में काशी दिखाई देता है। तब दिखाई देता है जब वो शिष्य बनता है, तब उसकी आंखें आंसू से भीगती हैं, तब वो अपने आप को समर्पण करने की पूरी क्रिया बनता है। और जब ऐसा करता है तो जो गुरु के पास है सब कुछ उसमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ कोई टेक एंड गिव वाला मामला नहीं है कि मैं मतलब जेब से निकाल करके कुछ दूं। गुरु प्राणों में स्थापन होने की क्रिया का मतलब है कि आप उनके नजदीक इतने चले जाए, उनके प्राण तुम्हारे प्राण एक हो जाए, उनकी देह तुम्हारी देह एक हो जाए। एक ही चिंतन रहे कि मैं कैसे इनको सुख पहुंचाऊं, क्योंकि ये शरीर मेरा है, ये जो गुरु का शरीर है ये मेरा ही शरीर है।
अब गुरु के कांटा चुभता है और तुम्हें अपने दर्द होने लग जाए, सारी रात तुम तड़फो, ये मैं खाना नहीं खाऊं मान लो, और तुम्हें मतलब सारी रात छटपटाहट महसूस हो और एहसास करो कि अपने घर में क्यों छटपटाहट है, कोई तकलीफ तो है नहीं, मगर क्या बात है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। मतलब क्या गड़बड़ है, ये तब हो सकता है जब तुम्हारे मेरे प्राण जुड़ेंगे। ये तब जुड़ेंगे जब तुम इनसे से बन सकोगे, जो तुम्हारी आंखों में एक भाव होगा। जब उसने कहा कि अंखें की कर कोठरी, आंखों की मैं कोठरी बनाना चाहती हूँ और पुतली पलंग बिछाए, और उस पुतली को भी उसमें पलंग बिछाना चाहती हूँ। अंखें की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकन की चिक डारी के, पलकों की चिक डाल के उसमें गुरु को बिठाना चाहता हूँ। प्रिय को लिया रिंझाए, ऐसा करके मैं प्रिय को रिंझाना चाहती हूँ, ऐसा चाहती हूँ, क्योंकि जब ऐसा हो जाएगा तो ना मैं देखूं और को, फिर दूसरा कोई पुरुष मेरी आंखों में आएगा ही नहीं। मगर एक बात और है, ना तो ही देखने दे हूं तो जब मैं आंखों बंद कर दूंगी तुम भी दूसरों को नहीं देख सकेगा, पूरी तरह से समर्पित कर दूंगा तुम्हें। ऐसी स्टेज में आकर के कबीर कहता है कि तुम्हारी बहू लिया हो। इस स्टेज में उस शिष्योपनिषद में कहा है कि गुरु और शिष्य तो अपने आप में प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, क्योंकि संसार का सबसे उच्चतम संबंध प्रेमी और प्रेमिका का होता है। न माँ बाप का होता है, न भाई बहन का होता है, न पति पत्नी का होता है। उनमें अपने आप में नित्य नवीनता बनी ही रहती है, नित्य नवीनता एक जिज्ञासा बनी रहती है, नित्य मिलने की इच्छा तड़प बनी रहती है। एक दिन भी प्रेमिका नहीं मिलती तो बड़ा अटपटा लगता है, क्या बात है, आई नहीं, क्या हुआ, तबीयत खराब है, और फिर माँ बाप ने रोक दिया, माँ ऐसी दुष्टशाली, वो गाड़ी देती नहीं है, ये बाप साला आराम नहीं, उसकी कदम मरोड़ दूंगा, मौका आएगा तो कुछ। अब वो चिंतनी खाली आई नहीं, कर्नाटक प्लेस में कार उठाना नहीं कहा, फिर अभी 5 मिनट और देख लेते हैं, शायद आ गया आई नहीं। उसकी गलती नहीं होगी, उसकी गलती कुछ नहीं है, बाप साला आराम नहीं है, और आई नहीं, 2 घंटे 2-2.5 घंटे क्या हो गया, घर जाए, बाप ने देख लिया तो क्या होगा, चलो घर नहीं जाते हैं, फिर भी जाएगा वो बेचारा, और दूसरे से रोका देखेगा, फिर दिखाई नहीं देगी, फिर रात बोतल फेंकेगा। अब टेलीफोन भी है, टेलीफोन करे तो कैसे करे, क्योंकि माँ उठा किसी का टेलीफोन नहीं दिया देख सर, ये बुढ़िया मरे ना साला टेलीफोन। और सारी रात वो घुमर चक्कर चलती है, इसलिए कि वो संबंध है प्रेमिका का संबंध, पत्नी का संबंध नहीं रहेंगे। भाई खाना खाए नहीं खाना, ठीक है, मुड़कर खा लेना जा, ऐसा होता है। जिस प्रेमिका के लिए तुम 3-3 घंटे तड़पते रहे, 5-5 घंटे तड़पते रहे, दुखी होते रहे, बेचैनी तुम्हें होती रही, 2 साल तो तुम्हारे समय इतने मधुर चले कि तुम एक को बिना देखे बिना रह नहीं सकते थे, और जब तुमने शादी की महीने और बाद तुम्हारा वो सारा जोश खत्म कर, मैं तो उसके प्रति आकर्षण, फिर एक दूसरी प्रेमिका ढूंढना शुरू कर देंगे। चलो अब ये तो वाइफ होगी, अब इसमें क्या, अब उसके बाद वो तुम लेट आते, लेट तो फिर ऑफिस का काम है, कुछ ठेका है तुम्हारे पास, 5 बजे जाओ, वही प्रेमिका जो तुम तड़प रहे थे, वो उनके बाद आज खाना नहीं खाया, पेट दर्द करा होगा, नहीं खाया होगा, तो मेरे ठीक है, डॉक्टर पास चलिए, गोली लिया, वो सब आकर्षण खत्म हो जाता है। पति पत्नी का आकर्षण वो नहीं होता, तुम्हारा किसी का नहीं होता। इसलिए उसने कहा कि जीवन में सबसे ऊंचा प्रेम प्रेमी और प्रेमिका का होता है, और वो संबंध गुरु शिष्य का बनना चाहिए, वो भक्त और भगवान का वो संबंध बनना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि वो 3 बजे का टाइम दिया, नहीं मिली तो फिर वो भटक रहा है, देख रहा है, तड़प रहा है, यूं देख रहा है, इधर देख रहा है, फिर फोटो निकाल रहा है, फिर देख रहा है, ऐसा होना चाहिए। मैं जोधपुर में एक बार गर्मी के दिन थे, मैं बैठा था, ये बात 7-8 साल पहले की बात है। यहाँ तुम्हारा आपुड़ एक जगह है, तो 23-24 साल का एक लड़का आया, जवान, सुंदर, स्वस्थ, बिल्कुल टाई वाई लगाई हुई, और कुर्सी में बैठ जाओ, तो कुर्सी बैठा, तो हाथ डाल चित्र दिखाया, तो मैं अपनी बात करना चाहता हूँ, मैं कहा कहो, मेरे 12 बज गए, फिर तुम 4 बजे आ जाना, तो नहीं गुरुजी 1-2 मिनट और लगेंगे, फिर निकाला, फिर डाला। सर ये क्या कर रहा है, उसे दिखता भले घर का लड़का है, और अब मेरे जीवन में शिष्य तो सैकड़ों अनेक रूप है, भगवान कई रूपों में आते, मेरे तो रूप, तुम्हारे जीवन में तो एक ही भगवान है गुरु ही, मेरे तो हजारों रूप है। तो उसे यूं करके मुझको देखता रहा, तुम कोई क्रिश्चियन है क्या, तो नहीं मुझे हिंदू, पक्का हिंदू, तो हिंदू तो है, मैंने कहा तुम कुछ बात करनी, हाँ गुरुजी एक सेकंड निकला, तो मैंने कहा तुम कोई अभी पागलखाने छूट के साधरा से आया, कहाँ रहता है, क्यों मैं रायपुर में रहता हूँ, तो मैं रायपुर में तो कोई ऐसा है नहीं पागलखाना, या तो आगरा में या सादरा में, तो तुम रायपुर में कैसे आया, तो आप मुझे पागल समझ रहे हैं। मैं कहा तुम जो कर रहा है उसे तुम ऐसा लग रहा है कि या तो मेंटली गड़बड़ तेरी, या तुम कोई भाग के आया हुआ है, क्या नहीं ऐसी कोई बात, आप मेरी बात सुनिए। तो मैं कहा तुम बोलेगा तो सुनूंगा, मैं कैसे सुनूंगा, गुरु जी क्या है कि आपको क्या बताऊं गुरु जी, कुछ बात,
कि आप कोई बुरा तो नहीं मानेंगे, तो फिर निकल आती गुरुजी मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, तो कह दे, आप बुरा नहीं मानेंगे, मैं काय के लिए बुरा मानूंगा? तुम कुछ कहेगा, गाली देगा तो मैं थप्पड़ मार दूंगा तुम्हें, बुरा तो मानूंगा नहीं, थप्पड़ मार दूंगा तुम। ये बात है, तुमसे मजबूत हो कि नहीं? वो तो कोई बात नहीं, आपको कह देता हूँ, 15 मिनट हो गए, कह दूंगा फिर दूंगा। आपने कोई प्रेम किया है गुरु जी किसी से? ऐसा से पहली बार आया, ऐसा पूछने के सीधा गुरु जी से डायरेक्ट कन्वर्सन पूरा किया है, बहुत किया है, अपने गुरुओं से किया है, देवताओं से किया है, अपनी पत्नी से किया है, वो सब। ये तुम ऐसी ये बात मत करो गुरु जी, मैं जो पूछ रहा हूँ कुछ और बात पूछ रहा हूँ, आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। फिर वो निकाला, मैं बिल्कुल दो टूक होता हूँ वैसे, मैं समझ तो गया था कि ये काय का चक्कर है, क्या है साला। तो मैंने कहा कैसा तुम क्या पूछना चाहते हो? आप दो टूक शर्माइए मत, सच्चाई हो, मैं किसी को कहने वाला नहीं हूँ, आपकी बात मेरे पेट में रहेगी। आपने प्रेम किया तो मैं काय के लिए तुम्हें कहूँ? कोई ठेका है नहीं तुम्हें कहूँ ये बात। अब किया भी होगा, अगर नहीं किया होगा कि अब इतनी जिंदगी लंबी चौड़ी ली होगी, शायद किया भी होगा, शायद नहीं भी किया होगा, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? गुरुजी पूछ इसलिए रहा हूँ कि एक प्रेमी ही प्रेमी का दिल जान सकता है गुरुजी, आप नहीं जान सकते। आप क्या जानो प्रेम क्या होता है गुरुजी, आप नहीं जान सकते। तो मेरे से दर्द बोल, पहले दर्द क्या है, कितना बड़ा दर्द, इतना है, कुछ मालूम पड़े कितने, मैंने इतना सा दर्द लिया होगा जिंदगी में, तो सारी इतना दर्द भोग रहा होगा, अब मालूम नहीं तेरे दर्द तक मैं पहुंचूं नहीं पहुंचूं, मगर क्या नहीं हूँ। आप ये पहले ये बताइए तो मैं अपनी समस्या बताऊं। ऐसा मैंने नहीं किया प्रेम, जैसा तुम कर रहा है वैसा जिंदगी में किया ही नहीं, कि करते होता से पकड़ के मुझे कभी जेल में डाल देते या खाने पहुंचा देते, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम कर क्या रहा है कि कुछ नहीं, अभी बता रहा हूँ जी, हाथ में ठीक है ईसा मसीह का फोटो हो गया जाता है इसके पास। तो गुरु जी क्या है कि मैं प्रेम करता हूँ गुरु जी, ये तो जितना भारतीय जो पैदा हुए वो सब यही करते हैं, सबसे पहले यही करते हैं, वो नहीं सफल होते हैं तो फिर दूसरा गुरु के पास जाते हैं, तो बाद की स्टेज है, शुरू तो यही करते हैं, इसमें तो फेल होते हैं तो फिर गुरु के पास पहुंचते हैं, ये तो अब सेकंड स्टेज में आया, सही है। Devotion means dedicating everything you possess, giving up all you have, and becoming one before whom or before what you devote yourself. When devotion is complete, you shall obtain everything. Thus you have to first empty out everything if you want to acquire the spiritual treasure. When the jug is empty, it can be filled again to its brim with one liquid. If your mind, your thoughts are already full, then I cannot write anything new on it, and my whole discourse shall go in vain. Only when you bring a plain, empty sheet of paper shall you be able to read the lines which I shall inscribe on it. If already it is filled with lies, deceit, immorality, then what can I write on it? Where shall I write? You say to your Guru, I have given up all I possess to you and am now empty. I am sitting in your feet, and it is up to you to give whatever shape or form to my life according to your wish. Till now I have lived life as I wished. Now you teach me how to live. You tell me what to do and how to do. I shall do whatever you ask me to. This is devotion. When you become devoted, then your position, your fame, all become insignificant. Then even if you are a millionaire, it would have no significance. Devotion means that you are nothing. It won't do if you say that you are devoted and then feel proud that you are an officer or you are such a great scholar. This is not devotion. Devotion means you are nothing at all, that you are empty, that you have no position, no fame, no money, no power, no wealth, and nothing.
Whatever you do have in material terms is at your home. Here in the feet of the Guru, you are fully devoted. And when a person reaches this stage, he becomes a true disciple. He is not a disciple from the beginning. First, he is just a curious person, then he becomes enlightened, and after adopting the three principles, service, sacrifice, and devotion, he becomes a disciple. Disciple in Sanskrit is Shishya, and it means to come closer. The disciple always comes closer to the Guru. This does not mean that he should go and embrace the Guru. This is not what I mean by coming closer. About 4 to 5 years back, when I was returning from Gangotri, there was this disciple who made very good arrangements for the 200 disciples who were with me. He arranged for their stay and their food. I promised to visit his house in Hyderabad. When I reached Hyderabad, he had hired a musical band and was feeling very happy. He had arranged for us to stay in a guest house, and on the gate of the place he stood with a plate containing a dozen lighted earthen lamps for Arati. When I reached the gate, he started the Arati. I stood there with my wife and some other disciples as he performed the ceremony. While performing the Arati, he came closer and closer, and soon the flames from the dozen lamps were hardly an inch or two from my face. I turned my face, and he came even closer. I strained my neck backwards to its limits. Still the intense heat reached me. I hesitated to say anything to him, as all his relatives, friends stood nearby. I thought, if I say something, he will feel hurt, and if I don't, my brows and hair will burn. I moved a step backward, and he moved still closer. O Gurudev, thou art an ocean of kindness. He sang as he performed the Arati, and I said to myself that soon this ocean of kindness shall end up on a bed in some hospital. I extended my hand to stop the Arati, but he said, Guruji, it is rarely that we get a chance. You hardly come to visit us. I said to myself, you have got a chance and I am stuck up. This does not mean that you send me straight to a hospital. To him I said, perform Arati from a distance. He said, Guruji, such occasions do not present themselves again and again. Today we have at last got a chance. And speaking these words, he came still closer to me. The intense heat almost scorched my face, and it seemed as if ages had passed when the Arati finally concluded. Till then, my face had become red like a hot iron. My poor wife became overtly anxious at my sorry state. She kept looking at me and with inquiring eyes, as if saying, what is all this? I said to her, what can I do? Today I am caught up amongst my disciples. I have always been kind to them. Now it is up to them whether they shower me with their kindness or not. Shishya does not mean that you come and ram into me and then say that I had asked you to come closer. Believe me, for coming closer, it's not necessary for you to break my bones. Coming close means becoming one with my soul, forming a bond with my soul and with my heart. When the disciple reaches the third stage,
he comes closer to the Guru. Coming closer means that even his thoughts are not his own. In this state, there remains no questions in his mind. Then he does not even think whether the Guru is an ordinary man of flesh and blood or he is a god. He only thinks that he is his Guru and his Guru is everything for him. When his thinking transforms in this manner and when he touches the feet of the Guru, he realizes divinity in those holy feet. When this happens, his eyes fill up with tears of joy, and thus the disciple learns how to devote himself fully. When he becomes fully devoted, he obtains everything from the Guru. In this relation of Guru and disciple, there is no give and take. Establishing yourself in the soul of the Guru means getting closer to him so that your soul and his soul fuse to become one, and even your physical form becomes one with that of the Guru. All the time, only one thought should remain in your mind, and that is how to make the Guru happy, because then the body of the Guru becomes your own. And if a thorn pricks the feet of your Guru, you feel the pain, you feel restless. You shall not be in distress, but shall still experience restlessness. Then you shall know that something is wrong. This shall happen only when your soul fuses with mine and becomes one with it. They shall become one when you become a disciple, when you devote yourself. आकियन की कर कोटरी पुतली पलंग बिछाए, पलकन की चिक डार के पियू को लिया रिंजाए. These lines were spoken by Meera, and she says, Akiyan ki kar kotari, that is, I want to make a room of my eyes. Putali palang bichai, I want to make a bed of the pupils in my eyes. Palkan ki chik darike, with the image of my beloved in my eyes, I shall close the curtain of my eyelids. Piyu ko liya rinjai, and thus I shall win over my beloved. She further says, Na mai dekhu aur ko, that is, then I shall look at no other man. Na to hai dekan dehu, and neither shall I let you see anyone else when I shall have confined you within my eyes. This is the state of complete devotion, and on reaching this stage, Kabir says, मैं तुम्हारी बहुरिया हूँ, that is, I am your beloved. And this is why the Shishyopanishad says that Guru and disciple are like two lovers, because the most close relation in this world is between two lovers, and such closeness is not seen even in the relation between a parent and a child, or between a brother and a sister. This is because in this relation there is always something new and fresh. There is a deep longing to meet again and again. Both remain restless to be together. If the girl fails to turn up one day, the boy feels uneasy and worries lest she is unwell. Or maybe he thinks her parents have stopped her from coming to him, and he starts abusing them. He remembers that she had promised to meet him in Connaught Place. He looks at his wristwatch and realizes that there are still 5 minutes left. Perhaps she will come, he thinks. 2 hours pass and he still keeps waiting. It cannot be her fault, he says to himself. It is her father who is so mean. He decides to go to her house. What if her father sees me, he thinks. Still gathering some courage, he reaches her place and keeps standing some distance from her house in the hope that
she would appear in the window or the terrace. She won't appear, and all night he shall remain perturbed. He cannot even ring her up because each time he gives a call, her mother picks up the phone. Why doesn't this old woman die? He says to himself. The whole night is spent waking without a moment's mental peace because this is the relation of two lovers and not a husband and wife. If you say to your wife that you don't wish to have food, instead of asking you if you are well or not, she won't even care and shall say, "Fine then, you can eat tomorrow." As lovers, you may have loved her deeply, and your sweet affair may have lasted 2 years, but as soon as you got married, all the enthusiasm and love seemed to have vanished forever. You won't even feel like talking to her and shall start looking for another girlfriend. You shall think that now she is your wife, thus she shall remain forever. So there is nothing to worry about her. She shall ask you why you came late from office. You shall reply that you work in an office and that you are not her servant to arrive exactly at 5 o'clock. This is the same girl you loved so dearly. She will say that she has not had food since the previous evening, and you shall not care at all. You shall ask her to better go to the doctor, and then you shall not give another thought to her illness. This is because the mutual attraction has vanished. No such love exists between a husband and a wife. This is why it's always said that the deepest love is between two lovers. The same close bond must exist between a guru and a disciple, between a devotee and God. If one of the two has promised to meet at 3 o'clock and does not turn up, then the other should feel uneasy, worried, and impatient. It was about 7 to 8 years back that I was sitting in my house at Jodhpur. It was midsummer and very hot. A young man about 23 to 24 years old from Hapur came to meet me. He was handsome and well dressed. He came to me and said, "May I sit down?" I asked him to do so. He sat down on a chair and took out a photograph from his pocket. He said to me, "I want to say something." "Be quick," I said. "It is already 12 in the noon, and it would be better if you come back at 4 in the evening." "No, please, Guruji, it shall take only a few minutes." And saying these words, he again took out the photograph, looked at it, and placed it back in his pocket. I said to myself, what is he trying to do? He seems to be from a well-to-do family. But why is he acting so strangely? Just as God appears in several forms before common folks, similarly, in my life, disciples have turned up in different varied guises. In your life, there may be only one God, the Guru. But in my life, I have seen so many epithets of him in the form of my disciples. I asked him, "Are you a Christian?" "No, Guruji," he said, "I am a Hindu." "Well, fine, you are a Hindu. But what do you want to say to me?" "Guruji, just 1 second," he said, and again took out the photograph, looked at it, and replaced it. "Have you escaped from a mental asylum in Shadara?" "Where are you from?" I asked him. "I live in Hapur, Guruji." "But there is no mental asylum in Hapur. There are asylums in Agra and Shadara. Then how come you are from Hapur?"
Guruji, you think I am mad? I said, well, the way you are behaving, anyone will think that you are mentally disbalanced and have escaped from an asylum. No, Guruji, this is not true. Please listen to what I have to say. How can I, when you don't tell me anything? Well, Guruji, the thing is that, Guruji, please don't be offended. I want to tell you something. It had become too much, but I controlled myself and said, speak up, don't hesitate. Guruji, I just hope you won't feel offended. Come on now, why shall I feel offended? If you abuse me, I shall at the most slap you, but I shall not be offended. I shall just slap you, that's all. You may be young, but I am in every way stronger than you. Guruji, that does not matter. Okay, let me tell you everything. You have already wasted 15 minutes. I said with mock anger. Have you ever loved anyone, Guruji? Anyone? Anytime? I said, you are the first disciple who is asking such a question. Nevertheless, let me tell you, I have loved my gurus and all the gods. This is not what I am talking about, Guruji, he said. I am asking you something quite different. You are not able to get what I am saying. Again he took out the photo. I got a hint what he was talking about. Still I said, what do you want to tell me? He said, please tell me clearly, Guruji. Don't hesitate or feel shy. I won't tell anybody. Your secret shall remain safe with me. Have you ever loved anyone? Why should I tell you? I said to him, I am not bound to tell anything to you. Life is so long, I may or may not have loved someone. But why do you ask? Guruji, I am asking you because only a lover can realize the plight of another. You can't understand, Guruji. You don't know what love is, and you can't know. I said to him, forget about me. Tell me how deep is your pain. I may have experienced only slight pain in my life, and God knows how big your pain is. I am not even sure if I can reach the depth of your pain. No, Guruji, he said, first reply to my question so that I can present my problem before you. Well, if you insist, I have never loved anyone the way you have. If I had, my disciples would have sent me to prison. I have never done any such thing. Now tell me what you want to say. Guruji, I am in love with someone. I said, well, this is nothing new. All Indians have only one motive in life, to love. And when they fail in love, they come to their gurus, which is the second stage. You have just entered this second stage.